जैसा कि आप जानते हैं, आज का एक प्रोग्राम तेलंगाना स्टेट में होने वाले फुल नीट की काउंसलिंग के सेशन में है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट 10+2 बाई की स्कीम से किया, फ्यूचर्स के डॉक्टर्स हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले मिसेस फातिमा से गाइड करता हूँ। वेलकम ऑर्डर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone here, welcome everyone. I'm sure you're aware why you have come here, correct? May I know why everyone is come here? Yeah? I can't hear them. May I know why everyone is here? Come on, future doctors, you're supposed to speak. Yeah? If you don't speak, then I am so sorry I can't come to you for my treatment. I can't do that. Yes, I repeat my question. Why is that everyone come here? Why is that everyone come here? Yes, very good. We are here for the NEET counseling. The reason why Hamid sir and all the Siyasat team is putting an effort is we minority students and parents are facing a lot of issues as to how to fill in application, how to go on for the online counseling, web counseling, and as per my state rank and Telangana rank and the NEET ranking, where is it I'm going to be placed and all that. There are so many queries. Please relax. We are going to answer all your queries, but initially what we are going to do is, agenda of the program is we're going to come one by one. So let's finish off that process one after the other. Then we're going to explain your queries. So don't be excited in between and raise hand that, you know what, I want this and want that, and I know, please, I understand that excitement doesn't really offer. So, agenda is going to be one environment and explanation about prospectus and the guidelines, web counseling and online procedure. And as I told you, expectation of seats, like my rank itna hai, to kahan pe, I'm going to be placed, and then what options do I have and all of that. So that we're going to definitely do. Now, I wanted to understand how many of you are serious about becoming the future doctors. Raise your hands. That's all? Very few. That's all? Okay, fine. That's okay. So any queries, please write down your queries. It's not that after you come here and you're like, हाँ ये भी पूछना था, okay, forgot that, हाँ ये भी था, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आके, हाँ, don't do all of that. आपके जो भी queries हैं, please list down कर लीजिए, एक के बाद एक जो भी है, फिर बाद में ये याद नहीं आया, वो भूल गए, फिर sir को call करे, sir like, you know, he's kind of very busy. So try doing, you know, putting on everything. Please लिख लीजिए अपने queries. Later on, it's not possible because time is running very fast. We will not be able to answer all of your questions. Okay? Sabke queries आप लोग please लिख लीजिए. There is going to be a query session at the end. We are going to answer all your queries. Please do. Okay? Possible? Can we listen to any of the future doctor? So designation मतलब एक apron बन रहा होगा, एक stethoscope ready होगा. From now, अभी कितने years के बाद वो सब पहन सकते हो आप लोग? How many years? Yeah, 2 years? 5 years? 5.5? Sure? चलिए ठीक है, 5.5 I'll take it. No problem. तो कोई एक ऐसा फ्यूचर डॉक्टर होगा, फीमेल या मेल जो भी है, यहाँ पे आके अगर इंस्पायर कर सकेंगे, why is that you want to go to become a future doctor? Please, can anyone come here? I appreciate his effort of coming in here. I want you to give a applause for him, please. Yes, please. Introduce your name and your rank. 1446 in state and around 34,000 in all India rank. So maybe I'm securing 478 marks. So maybe if Allah wills, I will be joining a medical college, minority or non-minority, that's not an issue. Local or non-local, I'm ready for that. Anywhere in India, I've applied for all the things. First of all, I'd like to tell that doctor is a very noble profession. I can say that it's the noblest of profession. Every profession comes after that. Why I'm saying this? Because if you see the glorious Quran, it's mentioned in Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verse number 32. If we see the second half of the verse, it says that anyone who saves any innocent human being, it is as though he has saved the whole of humanity. This is the second part of the verse. So if we base our concentration on this verse, so doctors are going to extract maximum benefit in this life and also in the hereafter. And according to the present scenario, according to World Health Organization, for every 1,000 individuals in a country, there should be at least one doctor.
and India is far beyond that. We don't have at least one doctor for 2,000 people. According to latest statistics presented, in a lack of 5 lakh doctors in our country. So most of the people need to take this profession. They need to understand the importance of this profession. So there's a need for more colleges to come up and more people to participate in it. So that's what I want to say. Thank you. Inspiring. I want one female to come up here and inspire us as well as you did. Yes, please. Assalamualaikum. My name is Samina Nasir. I'm securing a rank of 1177 in the state, and already rank is about 28,000, and I got now 494. Inshallah, I'm expecting a good college this time, and I hope everyone's prayers make me achieve that goal. I always wanted to become a doctor because it was my passion. I do not have any reason why I want to become a doctor, because I feel that the most is a field of medicine that attracts me the most, and the feel of helping somebody, helping the poor, helping anyone in need, is the most beautiful feeling in this world, and that's the reason I want to become a doctor. Thank you. So लोगों को थैंकफुल होना है। दूसरी चीज, किसमें एडमिशन मिलेगा, चल रहेगा, उनको एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे अहम बात यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। सभी लोग टच में थे, जिस वक्त रिजल्ट आया तमाम लोग होने की वजह से आज आप कितने लोग यहाँ देख रहे हैं, इसकी वजह यही है कि आप लोगों के पास अवेयरनेस आ गया, शऊर आ गया। वरना हम इंतजार करते थे कि आपको फॉर्म करना है, कि आपको अप्लाई करना है। अब आपके लिए 2 चीज खुशखबरी है। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस में और टेल्यू पेपर में एक चीज लिखी है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी 50% सीट है, लेकिन ये नहीं है। हमने शारदा मेडिकल कॉलेज और दूसरों से कंटेक्ट किया, ये अप्लाई है ओनली फॉर नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो एडमिशन होंगे, डॉक्टर में भी 90 सीट्स, शारदा मेडिकल कॉलेज में 90 सीट और ली आर के में 60। ये सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सबको डाउट होगा था कि हमारे 40 सीट कम होंगे। उसी वक्त निकला, हमने पेपर लेके दिया, अपील भी की, कंफर्म भी कर लिए। तो हमारे पास शारदा मेडिकल कॉलेज में रफीक साहब भी आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं रहती, इसलिए उसका हमारे पास अप्लाई नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉस्पेक्टस में आपको डाउट था। तो ये गुड न्यूज है सबके लिए। इंशाल्लाह 40 सीट आपके एक्स्ट्रा है, जो कम समझ जाएंगे। अब नीट के लिए प्रोसेस में भी आपको और एक गुड न्यूज क्या हो गई, आपको पहले फॉर्म दक्कन का अलग सबमिट करना, शादा का अलग सबमिट करना, काउंसिलिंग अलग करना था। अब आपको एक ही काउंसिलिंग होगी। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है सभी के लिए, ऑनलाइन। पहले यूनिवर्सिटी NTR UHS थी, तेलंगाना बनने के बाद KNR UHS आई, तालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अभी आप लोग MBBS करें, BDS करें, BHMS करें, BAMS करें, आपको डिग्री मिलेगी KNR UHS इंक्लूडिंग BUMS। तो ये चीजें थी, क्योंकि आपको आप लोग यहाँ पर मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाकर वेब काउंसलिंग का प्रोसेस बताना है, हर एक को अपना डाउट क्लियर करना है, आपको क्या रैंक मिलेगा, सभी को काउंसलिंग अटेंड करना है। तो मैं सबसे पहले, चूंकि हमारे पास सियासत के तहत मुख्तलिफ एक्टिविटीज चलती हैं, तो इन दिनों सऊदी अरब से साहब आए हुए हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी मोटिवेट लेक्चर कर रहे थे। प्रोग्राम में ताकीद हुई, फिर ये 3 लेवल है। कोर्ट पर आपको सीट अलाट होती है, फिर में आपको कॉलेज को रिपेयर करना होता है। इस तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड 5th लेवल।